architect. मंदिर की डिजाइन करते Belgium architect. He designed this area here, Heliopolis, to be for the rich people during the Turkish time, for the elites. Okay, that was 1907, something like this. This is the longest road in. बिल्कुल पुराना शहर Go tomorrow. नहीं हमरा यहाँ कोई मेरे ख्याल बाहर हुई है, बाहर की चक्कर में ये तो टूटा फूटा है सारा। हाँ कोई हमला जैसे होता है ना, एयर अटैक खत्म हो गया सब। Please subscribe and click the bell to get notification. This is the cemetery, City of the Dead. Oh, okay. Why is it called City of the Dead? I told you because people live inside the city. I mean, live inside between the graves. This is the fortress of Salahuddin al-Ayyubi on the right hand side. Salahuddin Ayyubi हर जगह पहुंचा है। He was ruling from Cairo here, and everything. Every time the Crusades, came to conquer Jerusalem, he came from Cairo to free the city. So it was built in the 12th century, about 1176, to dominate the city of Cairo and to protect, the city from the attacks of the Crusades. So the mosque on the right hand side, this is Sayyidah Aisha Mosque. City of Dead. Sayyidah Aisha, not the wife of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I think she was the daughter of Ja'far as-Sadiq. Maqam, her maqam. इसीलिए इसको City of Dead. Look at the cemetery now. Look at the City of the Dead. Yeah, the City of Dead. On both sides. सब टूटा है लेकिन लोग इसमें रहते So हैं। tomorrow we are going to go inside to see Imam Shafi'i Mosque. It's closed, but we'll see it from outside. And Sayyidina Nafisa Mosque there on this side. Tomorrow also. Or we are here now, NMEC, National Museum of Egyptian Civilization। ये वो म्यूज़ियम है जिसमें 21 फ़िरौनों की मम्मियाँ पड़ी हुई हैं, यानी फ़िरौन पड़े हुए हैं। उसमें रामसी 2 भी है जो कि अभी आपको साद भाई बताएगा। साद भाई, आपने रामसी 2 के बारे में बताना है मुझे। साद भाई आपको बताएंगे, हमारे ग्रुप के भाई हैं, एक अपनी मिसेस के साथ आए हैं, तो वो बताएंगे यहाँ पे रामसी 2 जो है वो कौन सा फेरो है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये इस वक्त हम नेशनल म्यूजियम ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। ये म्यूजियम जो मेन म्यूजियम है उससे थोड़ा सा हट के है, और इसकी खूबसूरती ये है कि इस म्यूजियम के अंदर रामसिस 2 का ममीफाइड बॉडी मौजूद है। वो वही रामसिस 2 जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ड्राई नील में जिसने जंग की थी, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मारा था तो दीवार ड्राई नील 2 टुकड़े हो गया था। जब वो पार चले गए तो रामसिस 2 ने अपनी फ़ौजें उनके पीछे लगाई उनसे लड़ने के लिए। तो यहाँ पर अभी हम अंदर जाएंगे तो रामसिस 2 की जो ममीफाइड जो हनूतशुदा बॉडी है वो देखेंगे। और अल्लाह ने उनके बारे में कहा था कि इनको इबरत बनाएंगे। वो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कुरान पाक की सूरत यूनुस की आयत नंबर 92 में इसका जिक्र है, और हमने फ़िरौन की लाश को बाहर फेंक दिया ताकि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए वो इबरत का निशान बन सके। थैंक यू साद भाई। और वो जो नज़र आ रहा है ना, वो सूफिया मॉस्क नहीं है इस्तांबुल में जो हमने देखा था, उसका रेप्लिका है ये वाला सूफिया मॉस्क, हाजा सूफिया का रेप्लिका है ये। हाँ, और ये बनाया भी तुर्किश लोगों ने है। मेरी फरा आ रही है, ये फरा जा रही है और अब मेरी फरा आ रही है। फरा आ जाओ, चलो अंदर। ड्रेस बड़ा प्यारा पहना है, शी लुक ब्यूटीफुल। ये 53,000 ईयर अगो का सिल्टन है। 53,000 ईयर। ये देखें, ये भी कभी जिंदा होगा। तो ये फेरो के टाइम के सर्वेंट दिखाए गए हैं कि ये ऐसे सर्वेंट काम करते थे।
वन ऑफ द फेरो के जो पिरामिड है उसके अंदर से निकली है ये चेयर ज्वेलरी सारा कुछ। और ये उनकी बिलीव किया जाता है लंदन के एक उसने ये दरियाफ्त किया है कि ये क्वीन की है। अब देखें वो कितने लायक थे हाँ। कि उनमें ना वो ये देखिए ना शेर के पंजे बने हुए शेर के पंजे और देखें उस वक्त भी वो 5000 साल पहले भी कितने वो मॉडर्न थे, कितने मॉडर्न थे। ये 5000 साल पहले पुरानी आज भी मॉडर्न ही है, मॉडर्न ही है। नहीं सही कह रहे हैं 5000 ईयर अगो। 80 सेंटीमीटर, 62 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 71 सेंटीमीटर है। कितने तरीके से बनाई हुई है, कितनी स्ट्रॉन्ग है ना। यही तो आर्ट था। वो सबसे ज्यादा सिविलाइज ये लोग थे, ये सबसे ज्यादा सिविलाइज थे। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द म्यूजियम एज वेल। ये देखिए ये सारी मम्मियाँ हैं, मुख्तलिफ मम्मियों की उन्होंने पिक्चर्स यहाँ रखे हुए हैं। सो दीज आर बेसिकली द 22 मम्मीज। Look this mummy, look that one. Saad bhai, which one is that one? ये रामसिस 2 का है। ये रामसिस 2 है। So this is Ramses 2. This Ramses 2. Yeah. और अभी हम नीचे जाके इसकी एक्चुअल मम्मी के पास जाएंगे। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने जब इसको गर्क किया ना रोदनील में, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें समंदर भी नहीं खाएगा और तुम्हें बाहर फेंक देगा और तुम्हें मैं दुनिया के लिए इबरत बनाऊंगा। इसकी बद शक्ल देखें आप ज़रा, इसकी कितनी बुरी शक्ल है या अल्लाह। मैं आपको पूरी तरह बता दूं, ये वो है जिसको अभी हम नीचे से जाएंगे, इसकी बॉडी देखेंगे, अस्तगफार पढ़ेंगे, इसको अल्लाह ने इबरत बना के रख दिया है। सो बेसिकली दिस इज़ लाइक अ फेरो टाइम ज्वेलरी and everything, but our Pashtun specialists, they're still wearing these kind of jewelry. कहाँ पे? काबा का कवर कहाँ है? ये काबे का कवर है। ओह Abu Bakr, this is Kaaba cover. Yeah. Wow. Since They when? used to make it every year until make it every maybe year. 1990. और इसमें लेके जाते थे इस वाले में। Oh, so this, This is but it says Sultan Sirajuddin. You know the. This is Mahmal. We put this cover inside this one here, and this one's supposed to be on a camel. Okay. It was a big caravan, you know, camels Okay. go to Mecca every year for So ये जो है ये काबा का कवर है जो एवरी साल बदलता है और Now इसको give me the devices please to go to the इसमें लेके जाते हैं। ये महमल इसको कहते हैं और इसमें इस कवर को लेके जाते हैं। पर यहाँ पे हिस्ट्री कुछ और लिखी हुई है। ये कहते हैं कि ये कैमल के साथ बांध के लेके जाते थे, पर यहाँ पे सुल्तान सिराजुद्दीन का कुछ लिखा हुआ है, तो ये पूरा लिखा हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। जो सुल्तान है वो इस बगी में उस कवर को डाल के, काबा के कवर को डाल के काबे पे चढ़ाने के लिए लेके जाते थे और ये ऊंट के साथ बांध देते थे। और अब हम आए हैं आमोन पेरिस म्यूज़ियम। यहाँ पे अगर आप कुरान की आयत या कुछ ऐसी चीज़ें ले लो तो उसकी गारंटी ये देते, सर्टिफिकेट देते कि अगर 100 साल बाद भी ख़राब हो गए हम उसको वापस लेंगे। तो चलते हैं अंदर। ये बिल्कुल पिरामिड के साथ ही है, जो गीज़ा पिरामिड्स है इनके साथ ही ये शॉप है। ग्रुप के सारे लोग आ रहे हैं, मैं pehले आ गई। Hello, Habibi, nice to meet you. Come close. Okay. How many one for tea, hot tea? Okay, so Habibi, my name is Mona. In my career, I'm famous by Mona Lisa. Oh. Nice then. Yes, I'll be your local guide to give you all the information about papyrus paper, papyrus plant, the nature of the plant, and then the process for making the paper. After that, we will look around. Anything you want, you will have it by a good discount, which is 30% discount. Okay. See, firstly, this gallery is named Ammon Papyrus Museum, controlled by Ministry of Tourism.
For a few minutes, I'll give you the information about the papyrus plant and its nature and how we get the paper from it. First of all, this plant is a tropical plant. Needs great amount of water and high temperature to grow up. And this atmosphere or weather only in Egypt. Because of this type of plant from ancient times until nowadays just planted in Egypt only on both sides of River Nile. Anyone tell you that they have this type of plant in their country, don't believe. Okay? Tamam. First of all, the flower of the plant looks like the sun rays, which is related to God Amun-Ra, God of the sun in ancient times. And also, when you check the stem itself, you will find that it takes triangle shape, pyramid shape, symbol of eternity, according to their beliefs in that time. To make the paper itself, we depend only on the stem of the plant. So, according size, we need smaller, medium, bigger. We cut from the stem of the plant. By the way, these plants reaches about 3 meters. But because the gallery here just for explanation, so we have small like this. Perfect? After that, we have to remove the green part. Useless in making the paper, but the fairies use it in making slippers, carpets, baskets, ropes, and mats. And that's because it is very, very strong, very, very flexible, as you see. The idea I'd like to prove for you how much this green part is very strong and flexible. So the fairies use it in making slippers, carpets, baskets, ropes, and mats. To make the papyrus paper itself, we just depend only on the white inner part. So we have to cut into slices like this. It is not flexible anyway because it's having inside it amount of water and amount of sugar. So we have to reduce the water by using the pen roll like this, as you see. And then after that it became flexible. Then we put it in the water for about 6 days, no chemical additions. After 6 days passed, sugar became gelatin. While the process or during the process, it used to stuck together by nature, no glue, no chemicals at all. Even because we have amount of time in water starting from 6 days, ending by 12 days, so you can see different colors in the slices, one lighter, one darker. And even in the paper, 6 days in the water to get the lighter, 12 days in the water to get the darker type of paper like this. Both of them same quality, strong, and that's okay. But the idea, color of paper. Tamam? And also, this different in color in the slices proves 100% that this paper is original and handmade process. Because you can find some people have original papyrus but machine process. And there is a quite difference between both. Even if it is original paper from papyrus plant, but machine process make it very less in quality. Okay, now, to collect the paper one by one, crisscross until we cut size we need for papyrus like this. Then after that we cover it and put it under the hand press for another 6 days. So 12 days as I told you, and we get result. هات لي شوية ورق فاضي يا علي. Okay, like this. This is the paper. Original handmade processed papyrus. If you check the paper, you will find different colors in the slices. One lighter, one darker. This is 100% original. Okay, انزل يا طه يلا. So ये ग्लो कर रहे हैं अंधेरे में. ये ना पीछे भी बहुत है. ये देखिए, ये ग्लो कर रहे हैं. ये पेपर पे जो बनाए हैं ये ग्लो कर रहे हैं. So he packed my. What paper is that? Abu Bakr, can you tell me which paper is that? This is papyrus paper. It's the first paper. Yeah, and can you show the stamp? Humankind. Yeah, show me the stamp. Stamped on here. And you say even 200 years.
if is anything go wrong, 1,000 years. 1,000 We are year. waiting for you here whenever you will come. Yeah, so I bought this. Recording it now. मैंने ले लिया है ये आयात है चारकोल है, लेकिन इसकी खासियत ये कह रहा था 150 कोट का, 150 कोट से 50 कोट का ले 55 का ले लिया है। और इसमें ये खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे पहला पेपर है जो कि पपाया टी की क्या जो इंग्लिश में उसने बताया उससे बना हुआ है। जो ग्लो होता है वो तो खैर बहुत ज़्यादा पेपर ग्लो होते हैं, पर इसकी खासियत ये है कि ये हैंडमेड पेपर है, उस पर बना हुआ है और 1000 साल की गारंटी है। इतनी उम्र कहाँ होगी, पर चलो घर में लगा देंगे। और ये पिरामिड यहाँ से कितना प्यारा नज़र आ रहा है। This time it's only 1.5 hours. एंड अब हम आ गए हैं इस रेस्टोरेंट में, यहाँ पे हमारे लिए स्पेशल फिश लंच तैयार हो रहा है। वाह, और बिल्कुल सामने पिरामिड है। आ गए हैं इधर और साथ ही आपको दिखा दूँ, इधर हम टेरेस टॉप पे खाना खा रहे हैं और खाने के साथ साथ ये देखिए पिरामिड सामने से नज़र आ रहे हैं। देख लो, ये दुनिया का 7 वंडर में से एक वंडर है। ये सही हो गया। तो अभी वो नज़र आ रहा है आपको, वो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है पिरामिड। आपको एक पेट्रा में भी दिखाया था, पेट्रा जॉर्डन में भी दिखाया था, ये भी देख ले। और इधर हमारे खाना बुक है, ये हमारा रेस्टोरेंट टॉप पे आए हुए हैं, टेरेस पे। हमारी फरहाना भी आ गई है, हेलो, हेलो, फरह जी भी आ गई है। तो बस बैठते हैं, धमाका मारते हैं। ये खाना आ गया है हमारा ट्रेडिशनल इजिप्शियन फूड, चलो अब खाते हैं। और ये आ गए हैं हम ग्रेट पिरामिड पे। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फेमस pyramid. The most famous pyramids ever in Egypt. Okay, in this area we have 9 pyramids, 3 big for the kings and 60 tiny pyramids for the wives and daughters of the kings. Okay, that was the cemetery of the 4th dynasty. So King Khufu or Cheops was the father, King Khephren or Khafra or Khephren was the son, and King Menkaura or Mykarinos was the grandson. So father, son, grandson. 3 behind the Great Pyramid, one for his mother, one for his wife, one for his daughter, and the third one also the same. So 9 pyramids in Giza here. But before they built the pyramid, in the pre-dynastic time, they used to dig a hole in the ground and they put the mummy like a fetus, like newborn baby. Okay? And they bought alabaster jars or marble jars, marble vases, and they filled this with a lot of stuff. Treasures for the kings, food, drinks, for the second life. We are talking about before 3200 BC, so more than 5200 years ago. And the first and second dynasties, they built benches, mud brick benches. They were square and rectangles, and underneath you can find the burial chamber. Okay, in the 3rd dynasty, about 2780 BC, there was a famous architect. His name is Imhotep. He managed to change the idea of building a pyramid, building a bench into step pyramid or a step mastaba. That was by chance. I mean, the architect was not planning to build a pyramid. Okay, he just built, a bench like the previous kings, but he used the stones for the first time, not mud brick. After he finished, this bench, it was like 8 meters high. He built, a fence around this, a wall, and the height of the wall was 10 meters. So the tomb was 8, and the wall was 10. He wanted to make the mastaba or the tomb of the king higher than the wall. So he put the second level on top of the first one smaller. Then he put the third one, 4th, 5th, 6th. It was from the step pyramid. Okay? And then later on in the 4th dynasty, they tried to build a complete pyramid. Complete one with a triangular shape.
Okay, so the father of this king here, he built two pyramids in different sites called Dahshur, about 36 kilometers south of here. The first pyramid he built is called Bent Pyramid. Bent, the largest pyramid in Egypt in the world. Okay, by the way, to build one of these pyramids here, it took a work of 100,000 men every year for 30 years. 30 years. 100,000 men every year for 30 years. And they used to work during the flood season because, you know, the water covered all the fields. So all the farmers, all the people came here to share this, and they get paid. So they were laborers who built the pyramid, not slaves. It was like, you know, a national project. चले अब आ गए हैं हम, अभी 20 मिनट हमारे पास आ गए हैं हम तो दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड, जिसमें एक फिरौन का जो टूम होता है, मकबरा होता है जो है, वो भी है। और इसको पता नहीं कितने हज़ार लोगों ने 30 साल में काम करके बनाया था। और इसकी जो ब्रेक्स हैं ये भी अमेजिंग है। और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से भी पहला था। और हिस्ट्री पढ़नी है तो बस देख ले गूगल कर ले। दिस इज़ टूम। अजीब ही लोग थे, इतना पैसा इतना टाइम इस पर स्पेंड किया है। ये देखो ना लड़कियों, प्यारा लग रहा है, कितना ऊंचा है। अगर किसी ने टोपी पहनी और इसको देखे ना तो टोपी गिर जाए इसकी। और ये देखिए मेरा ग्रुप कहाँ चढ़ा हुआ है, मैं नहीं चढ़ रही हूँ। ये देखिए मेरा पूरा ग्रुप वहाँ पे खड़ा है। ओह माय गॉड, बिठा दिया ऊंट पे। नहीं फूटेगी, नहीं टूटेगी। पीछे की तरफ रहे, पीछे की तरफ रहे, पीछे की तरफ रहे, पीछे की तरफ पुश कर। देविया गुड गर्ल। एवी डर रही है। So one of the boats which found here on this side of the pyramid, it's in this house here, the Japanese Mission of Archaeology. We are making restoration inside this little house there. You see the one of the tiny pyramids here? This is the second pyramid. I told you. This is the second pyramid. The second pyramid is here, but other pyramids in different sites there. The second pyramid is almost like, you know, the big one. Yeah. Only the height is different. Yeah. One is for his wife. No, all the pyramids were smooth like this. So this is part of the outer casing, the covering. His wife. So all the pyramids were like this one here. That's why it's considered one of the most complete pyramids. So these are the This is the third pyramid. This is the Look third at the second pyramid. and first pyramid. Huh? The second pyramid looks higher than the Great Pyramid. Yeah. Just because it's built on higher ground, as I told you. And we didn't find And anything this inside the is second pyramid. Only graffiti the by the three Italian pyramids. archaeologist who discovered, you know, the entrance. His name is Belzoni. So the graffiti says it was discovered by Belzoni in 1818. Very big writing on the wall. We are here at these pyramids. So the bigger one, इसको panorama point कहते हैं, और ये जो bigger one है ये बड़े किंग का है जो सबसे ज़्यादा खबीस था। ये छोटे वाला छोटे किंग का है जो थोड़ा खबीस था, और ये उसकी बीवी का है ना। नहीं ये यंगेस्ट किंग का है। सो ये तीनों खबीसों किंगों के पिरामिड हैं। आपको दिखा दिए। थैंक यू बोलना ज़रूर कमेंट में।